Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's jump straight to today's topic. So the first topic we will be discussing is regarding the stressed assets, or in normal term we call it इन जनरल टर्म वी कॉल इट एज NPAs, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. ठीक है, बट दिस स्ट्रेस्ड असेट्स इज द ब्रॉडर टर्म. कैसे है अभी देखते हैं. अच्छा, इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू, द लास्ट थिंग आई हैव टोल्ड यू इज अबाउट DFIs, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो उसमें मैंने चीज़ें बताई थी आपको. इट सर्व्स द अंडर सर्व्ड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी. तो वो मैंने थोड़ा सा बताया था. देन आई हैव टोल्ड यू डेट द मेन पर्पस ऑफ द DFIs इज टू डिस्पर्स लॉन्ग टर्म लोन्स. क्यों? बिकॉज दिस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दिस लार्ज कैपिटल इनफ्लोज डेट आर कमिंग टू आवर कंट्री, दे नीड वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी. सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? बाय गिविंग लोन्स. सो आवर बैंक्स आर नॉट दैट मच कैपेबल एनफ टू डिस्पर्स दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स. अंडरस्टूड? सो that's where these DFIs will come. क्यों नहीं देते बैंक्स लोन? they have the capability to give the loan, but they are anxious in giving these loans. Why? Because these loans will be given in the time period of 25 to 30-40 years. ठीक है. So first of all there is a huge risk involved in the long term giving of loans, क्योंकि कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है प्रोजेक्ट, कोई भी आपदा आ सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो लॉन्ग टर्म लोन्स आर स्लाइटली मोर रिस्कियर देन द शॉर्ट टर्म लोन्स. ठीक है. सो दैट्स वाई दीज बैंक्स, इंडियन बैंक, आर एंशियस इन गिविंग these long term loans. So there's how these developmental financial institutions come into play. So the first role I have told you is the disburse of long term loans, and second of all they are catering the needs of the underserved sectors of the economy. So this was the last class. थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ देने का मन किया इसीलिए दे दिया. Now jumping to stressed assets. So देखिए बैंकिंग बिजनेस कैसे चलता है. Although these all things I have taught you, I have discussed with you in news करंट अफेयर क्लासेस. तो मैंने उसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली बैड बैंक हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड, तो उसके लिए मैंने आपको पूरा वो वीडियो आधे घंटे की या 15-20 मिनट की है, वो भी आप देख लेना. सो वही मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, जल्दी से करूँगा थोड़ा. बैंकिंग बिजनेस कैसे चलता है? बैंक वन गिविंग लोन टू सम कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल हु इज़ अ एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, कैपिटलिस्ट, वेंचरिस्ट, जो भी बोल लीजिए. So the bank is giving some kind of loan to this, and in return it is charging some interest. Understood? So principal दिया है और interest दिया है. Now this capitalist or entrepreneur is investing this money in the creation of a capital. Now it is on this entrepreneur's luck that this business will run successfully or not. अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं होता है तो क्या होगा? इसके पैसे डूब जाएंगे. द एंटरप्रेन्योर विल बी इन लॉस एंड इट इज़ नॉट कैपेबल एनफ टू गिव बैक द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट. अंडरस्टूड? नाउ यहाँ से आती है हमारी स्ट्रेस्ड असेट्स की प्रॉब्लम. ठीक है, बैंकिंग बिजनेस ऐसे काम करता है, ये बाद में इंटरेस्ट लेते हैं और लास्ट में प्रिंसिपल भी चुका देते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ से आप यहाँ जाइए. स्ट्रेस्ड असेट्स इंक्लूड द NPAs, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, प्लस restructured लोन्स, एंड प्लस द राइट ऑफ. इंक खत्म हो गई है. सो these three things are included in the stressed assets. Now what are these? The NPAs, non-performing assets. These principal amount which the bank is giving to the entrepreneur, this is called the asset of the bank. Understood? मैंने जल्दी में बता दिया है, क्यों? क्योंकि वो पूरी क्लास पढ़ी हुई है. मैंने आपको बताया था ये है पब्लिक
public deposit its money to bank, and banks with the use of this money is dispersing further loans to the entrepreneurs. ठीक है, तो फिर अगर ये डूब जाएंगे तो बैंक के पास उसका असेट वापस नहीं आएगा. अगर बैंक के पास असेट वापस नहीं आएगा, इफ़ द असेट ऑफ द बैंक इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, इट मीन्स इट इज़ अ नॉन परफॉर्मिंग असेट. So this is kind of bad investment by the bank. Understood? Restructured loans. Now suppose this entrepreneur, वही चीज़ है सारी रिपीट कर रहा हूँ मैं. This entrepreneur is requesting bank that bank please give me 3 months more to repay your loan, and please it is a humble request, please bring down the इंटरेस्ट रेट. पहले आप 7% ले रहे थे, प्लीज़ 5% ही लीजिए. एंड आई एम एश्योरिंग यू दैट आफ्टर 3 months आई विल रिपे योर प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट अकर्ड. अंडरस्टूड? सो बैंक्स विल डिसाइड, contemplate on it that whether I will choose a NPA non-performing asset, or whatever this entrepreneur is requesting me, if he able to succeed it after 3 months, so it will be a better option for me than the NPA. कुछ तो रकम वापस आएगी. So that is nothing called but restructured loans. So this is the second stressed assets. क्या किया हमने? थोड़ी सी optimization की in the previous loan. ठीक है. The third thing is write off. See, दिस इज़ द बैंक बैलेंस शीट, और मान लीजिए कोई भी कंपनी बैलेंस शीट है. सो इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ मैंने पिछले क्लासेस में बताया था लिखी रहती है. सो इन दीज बिग बैंक्स देर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ NPAs एंड दीज आर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब दीज विल बी रिटर्न इन द असेट साइड. सो एनी इन्वेस्टर इन द कंपनी विल सी इट्स बैलेंस शीट एंड इट विल सी दैट yes there are numerous amount of assets in this company, but he will not be able to know that these are non-performing assets, or some of these are non-performing assets. Understood? So what did bank do for this case? They will assume that this particular amount, this particular asset is not coming back for sure, so they will write off, strike it from the bank's balance sheet, और उसको हटा देंगे, सो डैट बैंक्स बैलेंस शीट विल लुक क्लीन. तो इसका मतलब दिस असेट इज वर्थ ऑफ ₹10 crore एंड इट इज अ NPA, बट एज टू शो मोर क्लीन बैंक बैलेंस शीट, दिस 10 crore विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ 0 crore और ₹0. सो इसी को बोला गया है राइट ऑफ. अंडरस्टूड? एक ही चीज़ होती है कि जो इन्वेस्टर आए उसे अच्छे से बैंक्स बैलेंस शीट दिखे कि भाई ये हमारे रियल असेट्स हैं, ये हमारे लायबिलिटीज़ है. अंडरस्टूड? कोई भी उसे फेक चीज़ें ना दिखे इन द बैंक्स बैलेंस शीट. सो दीज इन्वेस्टर्स विल नॉट गेट मिसलीडेड बाय द बैलेंस शीट. अंडरस्टूड? सो दीज आर कॉल्ड राइट ऑफ. सो अभी जो मैंने करंट अफेयर्स की न्यूज़ बनाई थी वो यही थी कि इंडियाज़ फर्स्ट बैड बैंक हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड. नाउ इज़ दिस इंडियाज़ फर्स्ट बैड बैंक, और इंडियन सॉइल्स पे क्या ये फर्स्ट बैड बैंक था? इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड बैड बैंक और asset reconstruction company. Understood? There are various private firms. There are various private asset reconstruction companies running business on the soils of India. But this bad bank, जो भी उसका नाम है बहुत बड़ा सा, it has been established for the first time, which has been government backed. Understood? Now the problem of NPAs are not of the recent origin. These problems originated in 2000s. So around 2004 and 5, all the economies of the world are booming. So inherently Indian economy is also booming, and Indian economy GDP growth is touching 8 to 9%. So India's GDP is having the growth rate of 8 to 9% per annum at that period of time.
सो एज द इंडियन GDP ग्रोथ इज़ वेरी हाई, सो क्या हुआ, द बिग बिजनेसमैन, द स्मॉल बिजनेसमैन, एवरीवन हु हैज़ अ कैपिटलिस्ट और बिजनेसमैन माइंडसेट, they want to earn lucrative profit from this boom happening all over the world, and in specific the country of India, which is a developing country. So inherently in a developing country there is more growth rate than the developed country. जो पहले से डेवलप्ड है उसको आप कितना ही डेवलप कर लोगे, होगी डेवलप बट एट अ स्मॉलर मार्जिन, बट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में ग्रो होंगी. अंडरस्टूड. So the investment to GDP ratio at that period of time in 2004 to 2008. So in this small span of years 26 या 27 से अराउंड 38 पहुँच गई इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो. सो क्या हुआ, दीज बिग बिजनेसेस वांट टू एस्टेब्लिश big infrastructure projects to earn the lucrative profit. So there is a huge investment in the non food product loans. ठीक है, फूड प्रोडक्ट के लोन्स में तो क्या ही कर लेंगे ज़्यादा, बट दिस इज कॉल्ड द रियल इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर इकोनॉमी. सो दिस बिग बिजनेसेस started to plan and build big infrastructure projects in power transmission, in steel manufacturing. Understood? So the loans dispersed by the banks in this period has been doubled. 2 गुना ज़्यादा लोन देने लग गए बैंक्स. क्यों? बिकॉज इतना सब आपकी इकोनॉमी बूम हो रही है, सो आपको थोड़ा सा उसे और स्टिमुलेट करना पड़ेगा. Now on the parallel side there are huge capital inflows also from outside. So these all are accumulating as the debt on India. क्यों debt on India? Because these huge capital inflows which are coming to India, they are acting as a debt on India, not on Indian government but debt on India. The second of all, the banks are taking a very easy monetary policy. So वो बहुत ज़्यादा loans disperse कर रहे हैं. Understood? मैंने क्या बताया, डबल हो गया था इसी पीरियड में. So this is also acting as the debt on Indian firms. Now what happened in the last 3 years of UPA 2 government? I am talking about the year 2011, 12, 13. So these persons, these whole stockholders in the economy are thinking that yes, this growth will continue in the near future and we will have huge lucrative profit in this economy of India. But what happens, UPA 2 government, as there is a large huge capital inflows and there is dispersion of huge amount of loans, तो क्या हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनने लग गए. सो अगर ऐसे ही तेजी से प्रोजेक्ट बनने लगे तो दिक्कत हो जाएगी. सो UPA 2 has hold various number of projects. How? By not giving environmental clearance, land acquisition. So they hindered some of these projects. Moreover, the 2008 financial crisis, subprime crisis, these investors are thinking that okay, this phase is over, this financial crisis phase is over, now India will jump back on its rail to the higher GDP growth. But this doesn't happen. वहाँ पहुँच गई 5 to 6%. It means GDP ग्रोथ भी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी, एकदम से जो एक्सपेक्टेड था उतनी नहीं बढ़ी. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स किससे रिजल्ट हुआ, रिजल्टेड इन 2015 एज 40% ऑफ दीज फर्म्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज फैक्ट्रीज, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, इन्होंने जवाब दे दिया 40% ने. क्या बोला कि वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक्स. वाई? ये सब चीज़ें, कॉस्ट ओवररन, इफ़ यू आर नॉट गिविंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन पेपर्स टू अ प्राइवेट फर्म, सो इट विल रिजल्ट इन द कॉस्ट ओवररन. अब कॉस्ट ओवररन क्या होता है, जो चीज़ 3 महीने में हो रही है, 3 लेबर को हमने एक दीवार बनाने के लिए बोला है 3000 में,
अगर बारिश आ रही है, अगर कोई सुनामी आ रही है, कुछ भी हो गया, तो वो लेबर, वो दीवार तो बनानी है, तो वो लेबर 3 महीने की जगह 6 महीने में भी बनाएंगे, बट 6 महीने में वो 6,000 लेंगे, 3,000 क्यों लेंगे? सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ओवर, understood? So 40% of the companies in 2015 had turned down their hands and said कि we are not in the position to pay back all the interest of these banks. यहाँ चीज़ आ जाती है फिर NPAs. Now as these 40% banks are not giving interest back to the banks, so these are turning into non-performing assets. So the rampant loan given by the banks in this particular period, उसी का फल हम आज खा रहे हैं मस्त। क्या कि NPA has reached to approximately 9%, I think, and most of the NPAs are situated in the public sector banks. I have told you. ना इसका सॉल्यूशन क्या निकला? देखिए सॉल्यूशन में जो अभी हुआ है, एक तो वो भी चीज़ है, बट उससे पहले क्या हो रहा था? बिफोर दिस कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक, banks have given numerous powers to deal with these NPAs. So we have conferred a lot of discretion on banks. वो क्या करते थे banks? Firstly, they assess this NPA, that how much amount of NPAs they have. Then most of them, they want to convert into the restructured loans. अंडरस्टूड? कि कुछ तो पैसा वापस आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये काम कर रहे थे बैंक्स। नाउ इफ यू आर रीस्ट्रक्चरिंग अ लोन और यू आर रीफाइनेंसिंग इट, दे आर रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीफाइनेंसिंग इट, कि थोड़ी सी तो लोन दी है और लोन दे देते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, क्या पता हो जाए, बट दिस रिजल्ट्स इन दो दिस रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज ऑफ NPA। अंडरस्टूड? Secondly, banks now are anxious to give more loans. Why? Because already there is huge amount of NPAs and banks don't want their further assets to get or turned into the NPAs. So क्या हुआ एकदम से? जो ये तो इन्वेस्टमेंट टू GDP परसेंटेज था, इसको क्या हुआ? एकदम से प्लमटेड टू द ग्राउंड। अंडरस्टूड? लोन्स डिस्पर्शन बहुत ही कम हो गया। नाउ बैंक्स आर गिविंग दीज टू ऑप्शंस, रीफाइनेंसिंग एंड रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। क्यों? बिकॉज बैंक्स नो डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कम अप विद द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो ये आनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बचाव के लिए। सो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय रीफाइनेंसिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। सो इनडायरेक्टली इट इज ऑन द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस होल लोन इज ऑन द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये दिक्कत हो रही थी पूरी इंडियन इकोनॉमी में। सो दैट्स वाई नाउ अ बैड बैंक हैज बीन established। इसको अनदर नाम है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उस स्लाइड में आप जाके देख लेना, उस पूरी वीडियो में आप जाके देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा। क्या है ये बैड बैंक, कैसे काम करेगा ये सब है उसमें। अंडरस्टूड? सो अब्जॉर्ब दिस। इसके बाद हम थोड़ा बिल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? वो ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, है इम्पोर्टेंट पर ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने आप से ही पढ़ लेना। मैं बस एक ओवरव्यू अभी दे देता हूँ। फर्स्ट अब्जॉर्ब दिस।
नाउ दीज 3 एक्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर इकोनॉमिक कोर्स। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, प्लीज़ इनके जाके प्रोविजंस पढ़िए। चलो आप क्या पढ़ोगे, मैं लगा ही देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लेना। ये जो सरफेसी एक्ट है इसकी फुल फॉर्म नीचे आपको लिखी आ जाएगी, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इन दिस एक्ट प्रीवियसली व्हाट हैपन्स इफ देयर इज अ डिफॉल्टर who is not giving the principal amount as well as interest to the banks. So banks have to opt for the court procedures. Now the court procedures are very time consuming. So what happens, the assets of these banks remain stuck for 1 year, 2 year, 3 year. So take it in another way that these assets, this money is kept out of the Indian economy. समझ गए क्यों? बिकॉज कोर्ट केसेस में फंसे हैं, है ना। सो वाया दिस सरफेसी एक्ट नाउ द बैंक्स आर हैविंग द पावर्स दैट दे कैन सेल द असेट्स और द सिक्योरिटीज ऑफ दिस डिफॉल्टर। अंडरस्टूड? सो विदाउट गोइंग थ्रू द कोर्ट प्रोसीजर्स द बैंक्स हैव द पावर नाउ टू सेल द सिक्योरिटीज एंड असेट्स ऑफ दिस डिफॉल्टर। तो ये था पूरा सरफेसी एक्ट। कोर्ट प्रोसीजर से जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, कोई अपर फ्लोर है कि इतने से ऊपर का एक घोटाला होना चाहिए या डिफॉल्टर होना चाहिए 10 करोड़ 100 करोड़, ये सब आप एक बार अपनी स्क्रीन पे देख लेना। मैं एंड में सारे एक बार एक्ट्स लगा दूंगा। अंडरस्टूड? Now the second is I&BC code, Insolvency and Bankruptcy Code, and this is Fugitive Economic Offenders Act. I think 2018 का था ये। So I&BC code में क्या हुआ? देखिए, in the previous act the provisions are quite different, but in this 2016 का act, now it is the onus of creditor to start the insolvency procedure. In the previous classes I have told you about the insolvency and bankruptcy. Insolvency means the company doesn't have enough money, it is not in a position to pay back its creditors, that is insolvency. And bankruptcy is the legal procedure for the liquidation of a company. इसका मतलब कंपनी के पास रुपए खत्म हो गए हैं, कंगाल हो गई है, now we have to liquidate this company. What is the meaning of liquidation? We have to end this company. Understood? So now it is the onus of the creditor to file a complaint to National Company Law Tribunal about a insolvency of a company. कंपनी होगी, उसका क्रेडिटर होगा और उसका एक डिफॉल्टर भी होगा। सो डिफॉल्टर तो कर ही सकता है कि, but now it is the onus of the creditor to file the case in NCLT beforehand. Understood? Now the NCLT will accept this particular application of creditor. Then the NCLT will choose or nominate the insolvency professionals. These insolvency professionals will create the committee on creditors. There will be multiple stakeholders in this company, so the committee of creditors will be formed by the insolvency professionals. Now another kind of professionals, resolution professionals, will come up with the plan, okay, and they give this plan to the COC to approve. If the COC approve it by 66%, then resolution has been taken place, और ये सबको मानना पड़ेगा जो भी resolution plan आया है। अंडरस्टूड? कि कंपनी के इतने शेयर्स ऐसे एसेट्स में बेच दो और वापस कंपनी रन कर लो, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन प्लान। बट इफ दिस रेजोल्यूशन इज नॉट कंफर्म टू बाय दीज committee and creditors, then liquidation process of the committee of the company will start. So this was nothing but I&BC कोड ऑफ 2016, उसमें ये प्रोसीजर दिया है टू लिक्विडेट अ कंपनी। अंडरस्टूड? तो और भी इसके जो छोटे छोटे प्रोविजंस हैं कि 24 मंथ की सैलरी, शायद से मंथ ही है, हाँ 24 मंथ की सैलरी या वीक्स होगा, पता नहीं, देख लेना। 24 मंथ की सैलरी यू हैव टू गिव टू द वर्कर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, 24 मंथ से आई थिंक। तो और ये फर्स्ट प्रायोरिटी को दी जाएंगी। इसका मतलब जो भी असेट्स बेचा जाएगा इन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द
वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ सैलरी। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं, ये भी एक्ट में डाल दूंगा, देख लेना। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, तो इसमें तो आपको पता है जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं, ये घपला करके डिफ़ॉल्टर में और भाग जाते हैं इंडिया से। सो उनके ऊपर तो कोई लीगल केस शुरू ही नहीं हो पाया, अंडरस्टूड। इन पे फिर भी हो सकता है, पर वो जो भाग गए हैं उन पे तो हो ही नहीं सकता। सो द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट विल कम इनटू सिनेरियो। अंडर दिस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट is responsible to complete these cases. Now, before the actual commencement of legal case, enforcement directorate has the powers to confiscate the properties of these defaulters, these fugitive offenders, economic offenders, either in India or abroad. तो अब्रॉड में कोई प्रॉपर्टी होगी या इंडिया में कोई प्रॉपर्टी होगी, दोनों को ईडी कन्फिस्केट कर सकता है बिफोर द एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ लीगल केस। और यही हो रहा है विजय माल्या के संदर्भ में। यूके गवर्नमेंट से बात हो रही है और बस उसे लाने की बात, उसका एक्स्ट्राडिशन की बात तो चल ही रही है, बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द पैरेलल साइड, दे आर कन्फिस्केटिंग हिज प्रॉपर्टी इन द सॉइल्स ऑफ यूके, अंडरस्टूड। सो दिस वाज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। नाउ द लास्ट थिंग आई हैव टू टेल यू, उसके बाद हमारा मनी बैंकिंग खत्म हो जाएगा। Advanced pricing agreement. So this is next. Now what is this? See, this is कुछ भी मान लीजिए OnePlus in China. Now मान लीजिए this is OnePlus India, this is OnePlus मान लीजिए भूटान। सो ऐसे ऐसे this OnePlus China is the parent company and these are subsidiaries company और umbrella under the umbrella of OnePlus China, एक इंडिया में, एक भूटान में, कहीं और, ठीक है। Now the corporate rate direct income tax, corporate rate in China is मान लीजिए 3% only and in India it is 18.5%. So these businessmen are very shrewd, so they want to evade tax. तो कैसे करेंगे ये? OnePlus India is exporting some parts to OnePlus China. Why? मान लीजिए रॉ मटेरियल्स कुछ हैं जो OnePlus फ़ोन में लगते हैं और वो इंडिया में थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, दे विल इम्पोर्ट दीज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सब्सिडरीज एंड वहाँ उसको बना के फिर ये अपना जो भी काम करते हैं ऐसे करते होंगे। नाउ अ प्रोडक्ट हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम OnePlus India whose market value is just ₹50, but एज दीज बोथ कंपनीज किसके अंडर है, एक ही हेड है, तो इनके बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो OnePlus इंडिया का हेड है वो दिखा देगा कि ये चीज़ है 5,000 की, यही प्रोडक्ट है 5,000 का एंड आई एम एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट टू OnePlus चाइना। सो यही ये चीज़ दिखाएगा, किसको दिखाएगा ये, टू द टैक्स अथॉरिटी, डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज़ को ये चीज़ ये दिखाएगा। Now I have quoted a single example. Now there are various raw materials or things which have been imported by OnePlus China from OnePlus India. So the amount of these products, there's a huge list. So the amount of these products will result into the tax evasion from India. So जो बेस होगा, टैक्स बेस होगा इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, that will be decreased. क्यों? बिकॉज जो ये 50 या 5,000 दिखा रहा है
ये बोल रहा है इंडियन गवर्नमेंट ये मेरी एक्सपेंडिचर है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये जो भी आपके पास इनकम बची है इस पे लगेगा टैक्स। सो अगर आप ये बहुत ज़्यादा दिखा दोगे तो क्या होगा, आपका ये है जो प्रॉफिट ये कम हो जाएगा, है ना, ये प्रॉफिट ही तो हुआ ना, तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। नाउ ऑन द प्रॉफिट यू आर गिविंग टैक्स, नाउ एज यू आर मिनिमाइजिंग योर प्रॉफिट it means you are evading tax, it means that tax base of Indian government is reducing. Now this is the main problem with the multinational companies. This is not happening in India, but all the world is facing this kind of challenge with these capitalists or great businessmen. Understood? So this particular thing is called transfer pricing. अब आप बोलोगे सर ये वन प्लस चाइना में भी तो कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही वी हैव अज्यूम्ड दैट इन चाइना द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 3%। तो उसमें जो भी इंक्लूड हो जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट आएगा, वी हैव टू गिव ओनली 3%, बट द प्रॉफिट दैट इज इनकरिंग इन वन प्लस इंडिया अकाउंट द टैक्स रेट इज 18.5%। अंडरस्टूड? सो अनदर नेम इज गिवन टू दिस दैट इज बेस इरोजन and base erosion and profit shifting। एक्चुअली कभी कभी भूल जाता है ना, थोड़ा अलग जगह दिमाग है आज, किस पे है, अलग जगह पे नहीं है, कोई एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो उसी पे उसमें एनिमेशन और बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी। सो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, और ट्रांसफर प्राइसिंग भी इसी फिनोमिना का नाम है, तो आप समझ जाना आज के बाद। नाउ टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, सबको पता तो चल ही रहा है कि ये चीज़ हो रही है, तो क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड दीज MNCs they have signed an agreement, a contract which is called advance pricing agreement. In the beginning of year, for 2 to 3 years, these MNCs will generate a list that these number of things we are exporting or importing from these countries. The market value or prices of these components is this present value में ये चीज़ ही है। Understood? और ये लिस्ट, ये एग्रीमेंट दे देगा इन्हें। Now if in case this base erosion and profit shifting is taking place, now legally this company can be sued in the courts। Understood? So ये एक तरह से डर का माहौल बना दिया MNCs के लिए। Now transfer pricing is not that much easy on Indian soils। So इसमें 2-3 चीज़ें होती है कि कंपनी विल फॉलो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। इसका मतलब द इम्पोर्टर एंड द एक्सपोर्टर will be mutually exclusive, their decisions will be mutually exclusive, neither the importer will pressurize the exporter nor the exporter will pressurize the importer। Understood? So based on the market value the components will be exchanged by the two companies, doesn't matter their heads are same like in this case। Understood? So this was all regarding advance pricing agreement। एक और चीज़ है छोटी सी, bilateral investment treaties। इसमें क्या होता है, 2 countries bilateral है, so this is one country, this is second country, these 2 countries will sign a agreement that country 1 is saying that dear country 2, all the investments that have done by your citizens residents in my country, I will secure them properly, and this country 2 is promising the same to country 1। So this is called bilateral investment treaty। It means kind of secured investments in each other's country। So this is nothing but bilateral investment treaty। So आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा एक और चैप्टर खत्म हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग द गवर्नमेंट बजटिंग। अंडरस्टूड? सो इफ़ योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, हालांकि मैं बहुत ही अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगर नहीं भी हुए आपके कंसेप्ट्स क्लियर, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।